हमने अपने लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने डिफरेंट मोड स्टडी किए हैं कि आपका मॉसफेट जो है किस किस तरह से डिफरेंट मोड में ऑपरेट करता है। वी हैव स्टडीड कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन एंड आल्सो सैचुरेशन, नॉन सैचुरेशन रीजन। आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि ड्रेन और करंट की इक्वेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी उसको आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे आप उसको यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। हम कह सकते हैं कि आपको जो चैनल है वो उसको डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंट आपके पास क्वांटिटीज़ होती हैं, उससे आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इनिशियली आपको ये देखना है कि आपका एन प्लस रीजन जो है उनको आप कैसे बाइस करते हैं। आपका ये वाला रीजन है, इसको आप बाइस करते हैं विद वोल्टेज 0 एंड दिस वन इज़ बाइस्ड विद VDSN वोल्टेज एंड योर गेट टर्मिनल इज़ हायर देन ऑब्वियसली VTN, सो दैट यहाँ पे एक चैनल जो है वो क्रिएट हो सके और करंट जो है वो पास कर सके। आपका जो चैनल है उसको बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, जो कि जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं QE से। एंड जब भी आप यहाँ पे VDSN अप्लाई करेंगे तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बेसिकली क्रिएट करेगा, जिसकी डायरेक्शन जो है वो ये होगी फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली इन चैनल, वो एक ऑपोजिट फोर्स जो है उस पर अप्लाई होती है, जिसकी वजह से वो ट्रैवल करना शुरू करते हैं फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। अब ये नाम जो है बेसिकली जो सोर्स है, ये नाम इस वजह से आता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। सोर्स इज़ लाइक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रैवल करते हैं टूवर्ड्स ड्रेन। और ऑब्वियसली इस ट्रैवलिंग की वजह से, इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग की वजह से कन्वेंशनल करंट जो है बेसिकली वो क्रिएट होती है, और जिसकी डायरेक्शन है वो ड्रेन टू सोर्स है। आप जब भी सोर्स और ड्रेन के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो इसमें कंफ्यूज ना हो कि आपकी करंट जो है वो ड्रेन टू सोर्स ट्रैवल कर रही है, तो इसका नाम सोर्स क्यों है। तो बेसिकली ये सोर्स जो है ये सिर्फ इस वजह से है कि आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम दिस प्लेस टू द अदर टर्मिनल। So this is source and this is drain, and the current travels from drain to source. And your source is at 0 volts and the drain is at VDSN volts. So आपका ये वाला जो टर्मिनल है ये 0 है और ये VDSN है, तो इन दोनों में जो वोल्टेज डिफरेंस है वो बेसिकली क्या है, वो VDSN है हमारे पास डिफरेंस। हम ये कह सकते हैं कि ये एक डिस्टेंस है जो इस वोल्टेज में ट्रेवल करना है, या क्रॉस दिस डिस्टेंस आपने एक वोल्टेज अप्लाई की हुई है। जो डिस्टेंस है बेसिकली वो है 0 to L। L इज़ द चैनल लेंथ, जो कि ये आपके पास यहाँ पे चैनल लेंथ होती है अंडर दिस गेट। एंड वी कैन से दैट चैनल वोल्टेज वेरीज फ्रॉम 0 वोल्ट टू VDSN वोल्ट्स। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एट V of 0 distance 0 the voltage is 0, and at V of L at distance L voltage is VDSN, and channel voltage is represented by V of Y, as a function of Y, because this Y is a distance of from 0 to L। तो इस डिस्टेंस पे आप ये वोल्टेज जो है बेसिकली आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद दिस एक्सप्रेशन। अभी हमने ये स्टडी करना है कि ड्रेन और करंट इक्वेशंस क्या होती हैं, उसकी हम डेरिवेशन करके देख लेते हैं। ये उसके एक मॉडल है जिसमें हम देख सकते हैं कि जो चैनल है इसमें जो आपकी वोल्टेज है वो वेरी करती है फ्रॉम 0 to L, और ये बेसिकली डिक्रीज होती जाती है जैसे ही हम ट्रैवल करते हैं फ्रॉम 0 डिस्टेंस टू L डिस्टेंस। जो ड्रेन करंट है उसको ड्राइव करने के लिए हमारे पास ये मॉडल है, जिसको हम एक नॉन लीनियर मॉडल एज अ नॉन लीनियर मॉडल हमने शो किया हुआ। तो इसके थ्रू हम IDN जो है वो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये N+1 आपके पास रीजन है, सेकेंड N+ रीजन आपके पास ये वाला है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बेसिकली वो L डिस्टेंस है, और अगर आप इसकी विड्थ को यहाँ पे हाईलाइट करना चाहें तो बेसिकली ये आपकी विड्थ W है। तो आपका एट 0 पॉइंट एट 0 डिस्टेंस आपकी जो वोल्टेज है बेसिकली वो 0 वोल्ट्स है, एंड एट L डिस्टेंस जो वोल्टेज है वो VDSN है। और सिमिलरली इसको V of L से रिप्रेजेंट किया गया है और यहाँ पे V of 0 से रिप्रेजेंट किया गया है। मीन्स एट 0 एंड एट L वोल्टेज जो है वो V of L एंड V of 0 है। यहाँ पे हमने एक स्मॉल एरिया जो है वो कंसिडर किया है, जिसका जो बेसिकली जो विड्थ है वो है dy, and the voltage across is dV,
और जो करंट है वो फ्लो कर रही है इन डायरेक्शन फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। और ये बेसिकली इसकी नॉन लीनियर मॉडल यहाँ पे शो किया गया। तो अभी हमने बेसिकली डेरिवेशन करनी है कि आप IDN को कैसे फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से डिपेंड कर रही है VDSN पे एंड VGSN पे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो बेसिकली पहले ये देखना है कि ड्यू टू स्मॉल चेंज in voltage dV because of dy। सो ये जो बेसिकली dy है, इसकी वजह से जो वोल्टेज चेंज आता है वो हमारे पास dV है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड intensity over that like area region, like in this small region, is given by E of y, which is equal to minus dV divided by d of y. And the electric charge density of this channel is given by this formula, like electric charge density is given by this formula Q of E, which is equal to minus C oxide in VGSN minus VDN. So the electric charge density depends on C oxide, like thickness of oxide capacitance, and then like VGSN and VTN. Here here VGSN, VTN is effective voltage. Effective voltage, that is basically across gate terminal. And QE is not uniform. Obviously we said that the voltage changes across this channel, so our QE is not uniform. So we can say that QE is not form, which implies that IV characteristics are so like our IV characteristics should be non-linear, because that depends on the voltage that is applied across this two terminal, like drain and source terminals. So the actually what happens is the VDSN affects the QE, obviously across the channel. So we can say that QE is function of y, like the distance between the two terminals. So QE is function of y, and y is our distance from one n plus region to the second n plus region. And we can say that V of y opposes VGSN, as it is a positive value, a positive voltage obviously. So we can say that Q of E of y is equal to minus C oxide
VGSN minus VTN and minus V of Y. And this basically V of Y is the voltage applied across the drain terminal. So at Y is equal to 0, V of 0 obviously is equal to 0. So we can say that Q of E at 0 is equal to minus C oxide VGSN minus VTN. And similarly at Y is equal to L at the farther distance, we can say that V of L is equal to VDSN, and similarly or like Q of L will be equal to minus C oxide VGSN minus VTN minus VDSN. So our charge density should be equal to VGSN minus VTN minus obviously VDSN, because it depends on VDSN. So the current IDN flows through small region dy with resistance dr obviously. So we can find that resistance as well. So the current IDN flows through the small region dy with resistance dr it can be calculated using the formula V is equal to IR. So we can say that D of V is equal to IDN and D of R. Like this is the voltage across this small region, and this is resistance of the small region. So we can say that D of R is equal to D of Y divided by sigma N and A of N. Sigma N is basically conductivity, and A of N is the area of region. So if thickness of segment is given by x of E, then we can say that sigma n A of n will be equal to Q mu n of E multiplied by like W cross x of E. Here these three values are sigma n, and these two values are area. So and we can say that this is mobility of electrons, and N of E is like electron density per unit, like per cube unit area. And charge density is given by charge density is given by Q of E equal to minus Q and E x of E, and we can say that dr now will be sigma n A of n. If we put the values here, जो हमने values यहाँ पे कैलकुलेट की हैं, तो हमारे पास जो dr की इक्वेशन आएगी वो होगी dy q mu n and e w and xe. If we want to write in form of QE, then we can say that Q and E and XE should be replaced with minus dy by, like we have to write mu n W and QE. So अभी हमारे पास dr की इक्वेशन ये आ जाती है. अगर हम ये dr की जो इक्वेशन है इसको हम पुट करें dv की इक्वेशन में, तो हमारे पास जो इक्वेशन थी बेसिकली dv की वो थी IDSN एंड dr. ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर लें, ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे जो है हमारे पास जो इक्वेशन आएगी IDN dy डिवाइडेड बाय mu n W and QE, and we know that Q of E was equal to minus C oxide VGSN minus
VTN, and this implies that dV should be equal to IDN divided by mu n W C oxide VGSN minus VTN minus V, obviously because our this QE was dependent on V as well, so we can write minus V here as well, and this we have to derivate over dy. And if we rearrange these equations, so we can say that IDN dy should be equal to mu n W C oxide and VGSN minus VTN minus V of y and dV. So to find the values of current, we have to integrate this equation or like from 0 to L. So we can say that IDN, integrate it over 0 to L, and we say that this was equal to dy, and mu n W C oxide, on this side we have to integrate it over 0 to L, this expression VGSN minus VTN and minus V. So this was equal to d of V. So because we here we have a d of V, and so we have to integrate the voltages here. So if we solve these expressions here, we will get IDN and L, which is equal to mu n C W C oxide. If we integrate this expression, we will get like VGSN minus VTN VDSN, and minus, if we integrate this expression, we will get VDSN squared divided by 2. And if we rearrange this equation, we will get IDSN will be equal to mu n W by L and C oxide VGSN minus VTN VDSN minus SN square divided by 2. सो ये हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आती है जब भी आप लोग IDN की वैल्यूज़ फाइंड करना चाहें, तो ये हमारे पास एक फाइनल एक्सप्रेशन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग चैनल करंट। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है वो नॉन लीनियर है। अब नॉन लीनियर इसलिए है कि ये डिपेंड कर रही है VDSN पे, एंड ऑब्वियसली इसकी वजह से जो करंट है वो आपकी वेरी करेगी थ्रू आउट दिस चैनल। सो at the end we can say that at transition point QE, which is equal, obviously QE for L, like at the further distance from source to drain, जो QE की वैल्यू है उसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं VGSN माइनस VTN माइनस V सैचुरेशन से, और इसको हम 0 की इक्वल पुट कर सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि चैनल वैनिशेस नियर द ड्रेन, जैसे कि हमने फिगर में देखा था कि आपका जो ड्रेन साइड पे चैनल है वो शॉर्ट हो जाता है, और दिस इज़ नोन एज अ चैनल पिंच ऑफ, and this results in saturation mode and channel length modulation as well. So अभी हमने ये देखा है कि आप लोग किस तरह से IDN की इक्वेशन जो है वो बेसिकली ड्राइव कर सकते हैं, और वो किस तरह से डिपेंड करती है VDSN पे। आपके लिए एक असाइनमेंट का क्वेश्चन है, ये बेसिकली आपने सॉल्व करना है कि व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर IDN एट VDSN इज इक्वल टू V सैचुरेशन। अभी हमने सिर्फ वैल्यूज़ फाइंड की हैं, हमने सिर्फ एक्सप्रेशन फाइंड की है। आपने ये देखना है कि ये जो एक्सप्रेशन है बेसिकली इसको आप कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जब आपकी VDSN की वैल्यू जो है वो V सैचुरेशन की इक्वल हो तो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।